अगस्त सितंबर 14 में कुछ लोग तैयार भी हो गए एंड वन फाइन डे वी थॉट विल गेट 3 term sheet tomorrow, बट देन housing.com raised $90 million from SoftBank. अगले दिन वो 3 इन्वेस्टर भी भाग गए. Then it took us another 3-4 months. एक टिपिकल मतलब जर्नलिस्ट का सवाल जब भी हमने पैसा रेस किया है ये होता था, अब आप कितनी सिटीज़ लॉन्च करने वाले हैं. लोगों को लगता है आज पैसा आया कल सिटीज़ ओपन कर दो. So we have never done that particular thing. We want to be a one-stop shop for real estate. You can say we are Amazon of real estate. Now you don't go to Google and search if you want a phone or whatever. You go to Amazon and search. So I'm saying we are like Amazon of real estate. Anything related to house, shop, commercial building, that should happen in NoBroker. उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ ना कि जब हम लोगों को घर दिलाने लगे, लोगों के घर किराए पे फ्री में जाने लगे, वी गॉट एन अमेजिंग WM, वर्ड ऑफ माउथ. हमारा हर एक हैप्पी कस्टमर वाज अ फ्री मार्केटियर फॉर अस. द इंफ्रास्ट्रक्चर यू गो, क्या अमेजिंग रोड्स बन गए इंडिया में. अप नॉर्थ बहुत अमेजिंग रोड्स आर देयर. काश बैंगलोर में ही बनते अच्छे रोड. मैं इसी बारे बोला अप नॉर्थ. एंड वो जीप जा रही है, अब पीछे सब ब्रोकर्स आ रहे हैं अपनी बाइक के ऊपर, 2-2, 3-3, 4-4, मतलब कम से कम 15-20 बाइक रही होंगी. और रास्ते में हम सोच रहे हैं कि यार पुलिस कंप्लेन हमने करी और हमें पुलिस की जीप पे बिठा के क्यों लेके जा रहे हैं. और ब्रोकर्स जिन्होंने हमला किया वो बाहर आ रहे पीछे. ऐसे मूवी का सीन था वो बिल्कुल. Hi, this is Siddharth Aluwalia. Welcome to 100x Entrepreneur Podcast. Today I have with me Akhil Gupta, co-founder and CTO of NoBroker. Akhil, your journey is very inspiring. You know, yours, Amit's, and the entire NoBroker's team. There was a time when you just had started in Bangalore and real estate brokers came to your office, thrashed your office. You know, they were pelting stones and what else not, right? Yeah. I would call that moment a product market fit. True. True. And we realized it later though. We were scared that what has happened because we had just started. So we started working in the idea in 2013. August 13 is when I started coding on the software. It was live by March, just after my daughter was born. And this is March 14 till, you can say August 13 till February 15th, we were bootstrapping because we were trying to see whether it will work or not because it's a totally new concept which was there. March 15 is when we had set up the office, something like this, penthouse kind of a bungalow in HSR layout because in US everybody starts in garage. So we said we'll do it in a penthouse and in August this happened. So one fine afternoon, me and Amit, we were standing in a balcony and we were just talking. And we saw 40-50 people who are coming towards our office. And we thought जनरल कोई धरना हो रहा होगा क्योंकि टिपिकली इंडिया में होता रहता है कहीं पे और HSR लेआउट है तो वहाँ पे कुछ हो रहा होगा. And then we realized, by the time we could realize, and we didn't have a gate in front of our house. For some reason, owner didn't put a gate. So it was like, you can just walk in to the door. And these guys started banging the doors. They were trying to come in, throw the laptops, computers. And then me and Amit, we went down. And then we realized that they are just ready to beat the shit out of us. They are just throwing the slabs around. One of the slab went past our face. We called then we just locked ourselves and went to the second floor, called the police. Police came. Police guy, I still remember that, maybe Chotu police guy, the Thular kind of a guy. He came with a specs aviator and he stood on the side of the wall and he said, "Where's your rent agreement? How are you doing this?" And we said, "Boss, we have called you. We have been attacked because of the local thing." We said, "But how does it matter and all?" We said, "We have rent agreement." He said, "Let's go to police station." And that was Madiwala police station. And when we went to the police station, they asked us to sit in that hoysala. So me and Amit, we sat. There was 1 or 2 more guys on the back side. Typically जो पुलिस मूवी में होता है ना, जैसे पीछे बैठ जाते हैं. एंड वो जीप जा रही है, अब पीछे सब ब्रोकर्स आ रहे हैं अपनी बाइक के ऊपर, 2-2, 3-3, 4-4, मतलब कम से कम 15-20 बाइक रही होंगी. और रास्ते में हम सोच रहे हैं कि यार पुलिस कंप्लेन हमने करी और हमें पुलिस की जीप पे बिठा के क्यों लेके जा रहे हैं. और ब्रोकर्स जिन्होंने हमला किया वो बाहर आ रहे हैं पीछे. ऐसे मूवी का सीन था वो बिल्कुल. बट व्हेन वी रीच टू द पुलिस स्टेशन, दैट स्टेशन इन चार्ज, आई थिंक ही वाज अ वेरी स्मार्ट गाय. ही थ्रैश्ड दोस गाइज लाइक एनीथिंग, सेइंग दैट ये तो वैसे ही हो गया कि दुकान वाले जाके फ्लिपकार्ट के ऑफिस में पत्थर मार रहे हैं, ऊबर वाले टैक्सी फोड़ रहे हैं एंड ऑल. बट ही एडवाइज्ड अस दैट यू शुड नॉट बी इन दिस ऑफिस. टिपिकली he advised, he warned, whatever it was. But 12 or 1 p.m. that day, after that we were out of office. So we could never go back to office. It was locked, sealed. And you were bootstrapped till then?
No, we raised our funds. So we had raised 3 million from SAP Partners, which is now Elevation. So we had set up the office. We had around 70, 80 people in that particular office that time. Yeah, so that was very, very defining moment in our journey, because we knew things what we are doing is making an impact. But when this happened, and when it was in newspapers, we started getting calls, and we have a call on our call center recorded where somebody is calling and वो धमका रहा है. उन्हें क्या लगा कि ठोक देंगे, कंप्यूटर तोड़ देंगे तो nobroker.com बंद हो जाने वाली है. They didn't understand the concept of cloud. What is cloud? उन्हें लगा इसी ऑफिस में से चल रही है. तो फिर वही धमकी कि आप बंद करो, ये सब करो. We have a local MLA who is supporting us and all those things. We said ठीक है भाई. और फिर रात को भी हम लोग जब पहुंचे तो हमें कॉल आ रहे हैं. हाँ. हमने हमारा कॉल सेंटर का नंबर डाइवर्ट कर लिया था. वो रिकॉर्डेड है कॉल, पूरी तरीके से धमका. हम डर गए थे. मतलब कोई भी डर जाएगा, डरना भी चाहिए. मतलब आई कैन से in philosophy that was the point when we knew that now things have moved and we were pumped up. We were certainly pumped up, but maybe after a week when our investors called us and they said, boss, this is the real disruption. Like, you guys are doing something, and that this incident is an example, or it's a proof. As you said, it's a PMF kind of a thing. And even more fascinating thing was, I think we were 70, 80 people. We didn't know where to go next day. That afternoon, we sat in a cafe in HSR. We said, let's plan how will we do it. So a couple of our startup friends, they came up and helped us. So one guy said, मेरा बंगलो है HSR में ऐसा ही जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, उसमें ऊपर 1-2 रूम खाली है, आप वहाँ से काम कर लो. और एक बंदे ने बोल दिया, अभिषेक फ्रॉम ट्रैक्शन, ही गिव अस हिज ऑफिस जहाँ पे ही हैड अ कोवर्किंग. सो वी स्प्लिट आवर टीम. ऑपरेशंस उधर भेज दिया, टेक्नोलॉजी इधर आ गए. No tables, nothing. This big room, a little bigger. We had just put the mattresses and we were working out of that particular thing. The next day, not even single employee took a leave. Everybody showed up. And I think that was the most defining moment for us. Other than the attack, when you know that you are doing something and people are behind you, that changed our perspective, and that gave us the confidence कि यार कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे and something good will happen out of it. And you always had this clarity that NoBroker will become the largest player in the rental and the buying of, properties in India. We wanted it to be. Clarity तो पता नहीं, मतलब clarity depends on execution. I'll take you back. When I was in IIT Bombay, Saurabh is my senior from IIT Bombay. Amit Saurabh batchmate at IIM Ahmedabad. So I went to IIT in 2000. And 2000 till 2005, I was dual degree. And I have seen the change happening. I am from Kota in Rajasthan. ट्रेन से हम लोग जाते थे बॉम्बे. एंड whenever we had to come back home, ट्रेन टिकट बुक कराने के लिए हमें कांजूरमार्ग रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था. वहाँ से हम वीटी वगैरह जाके टिकट बुक कराते थे. सिमिलरली whenever we had to go to मूवी, तेरे पास 4-5 थिएटर थे. आप गांधीनगर में चले जाओगे, आप घाटकोपर में श्रेयास में चले जाओगे. एंड वी डिडंट इवन नो हाउ मेनी थिएटर्स आर देयर. कट शॉट टू 2004, इंटरनेट IIT में डे 0 से था. We knew how to surf and all. Then we realized that there are portals like Book My Show, Make My Trip. तो Book My Show पे हम लोग टिकट बुक कराते थे. IMAX वडाला में मूवी देखने जाते थे from Powai for 100 rupees, and we could choose the seat also. And that was the power, disintermediation which was happening. Similarly, flight tickets, train tickets, we started booking online. So जहन में कहीं पे था कि यार technology will be able to change it. And when we were discussing this idea, we said, if it has happened in all other industry, why exactly it has not happened in real estate? So theoretically, we knew that this will be something big. It was all about execution, and I think we have been able to execute well to be the number 1 player in India now. What are the other obstacles that came on the way? I believe it wouldn't have been easy, right? So I think first one was like after we started, 1st March 2014 is when I made it live. Basically, I had put in the DNS server so that NoBroker can start. Otherwise, it was live for so many days. And then we started seeing listings happening. People were getting houses. We were going to investors. Investors were saying, wow, good, nice traction. But it has not been done in the West. वो तो एक टिपिकल कहानी थी इंडियन इकोसिस्टम के अंदर. अब चेंज हो गई है. बट तब यार यूएस में किसी ने क्यों नहीं किया, यूके में किसी ने क्यों नहीं किया. यूएस में तो जिलो है, वो ब्रोकर के साथ काम करता है, पर्पल ब्रोकर के साथ काम करता है यूके के अंदर. एंड इट वाज टफ टू एक्सप्लेन इट टू देम. एंड एवरीबडी वाज लाइकिंग द आइडिया, एवरीबडी वाज अंडरस्टैंडिंग दैट थ्योरेटिकली दिस इज हाउ इट शुड हैपन, बट दे वर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट. अगस्त सितंबर 14 में कुछ लोग तैयार भी हो गए. एंड वन फाइन डे वी थॉट विल गेट 3 term sheet tomorrow.
But then housing.com raised $90 million from SoftBank. अगले दिन वो 3 इन्वेस्टर भी भाग गए. Then it took us another 3-4 months where SAF partners agreed to invest $3 million. Hi everyone. Before we begin, I would like to share that this podcast is brought to you by Prime Venture Partners, an early stage VC fund led by Amit Somani, Shripati Acharya and Sanjay Swami. Prime is often the first institutional investor in category defining tech startups in fintech, SaaS, healthcare and education such as MyGate, Quizzes, Planet Spark, Bolt and Clip. To know more about Prime, visit primevp.in. देखिए, journey will not be there without obstacles. If it is without obstacles, it's not journey. Either you have taken the road which is extremely easy, nobody goes to that particular road, or you are not working to your full potential. So that was one. Second was broker attack. Hiring has always been a challenge, but we have been extremely lucky to have our friends and our colleagues in previous companies to come and join us and take the leadership role. Starting anything new, like when we realized that, okay, this marketplace has been built, and first thing what we did was, how do we add value back to our consumers? Because broker पे तो कोई trust नहीं करता इंडिया के अंदर. Everybody is shit scared of the broker, and these guys are like kind of half goons. So we became the trusted party. People were looking up to us कि बॉस आपने घर दिला दिया, मेरा रेंट एग्रीमेंट, मेरा पैकर्स एंड मूवर्स, क्या क्लीनिंग में कुछ करा दो. तो हमने शुरू में सोचा कि लीड देते हैं हम लोग. सो वी टाइड अप विद many different companies and we started to pass on the lead, and everybody was saying, अरे हमारा तो कुछ conversion नहीं होता. And we were like confused कि यार there is no better source than us who can tell you when exactly Siddharth is moving, correct? Because I have got a house to him, and in next whatever days he has to certainly move. Still conversion is not happening, and that is when we decided, okay, we'll stop this lead business. Anyways, we are a platform. We will become this marketplace even for the services business. So that shift, whether to do, whether to not do, whether to continue being on this side of the business or get your feet in this business, because then it becomes even more difficult. That how do you manage so many partners who are not maybe half educated, getting your app out, managing them to adhere to the SOP of your company, ensuring that they are giving the best service so that your brand reputation is not coming at the stake. I think that has been another thing. COVID, everybody has seen COVID. As COVID came, we saw our everything, all the transactions coming down to zero. Moving such big team to their house and enabling them to work from their house. And again, we were like, I'll say, lucky or smart enough to ensure that we have the tech in our control. So within 2 days, we were able to enable everybody to work from home. Take your laptop back home, take your computer back home. If you are a call center executive, you will get a call at your home, like on your phone. You will get the phone, but still all the calls are recorded, all the calls are monitored, your performance, your custom. We didn't let go our customer experience down even by a notch. So I think that was another thing. Now getting back people to office and make them work, so that is also difficult. So I think it's part and parcel, and it will continue to happen. But other than your office getting thrashed, what was the other defining moments during the journey? You knew that now you are onto something big. Office getting thrashed was like proof that we are doing something which is right. When we started saving money for our consumers, when they started writing back to us, बहुत सारे लोगों ने, सर आपने मेरे 25,000 रुपये बचा लिए, 30,000 रुपये बचा लिए, इससे मैं अपने बच्चे के लिए टेबल मेज खरीद लूँगा, correct? इससे I'll be able to get something else for my kids, or maybe this will help in getting a white good in my house. That was very fascinating, correct? I still remember there was a customer in Chennai. He gave us 3 houses to be rented out. Okay, उसके तीनों हाउस विदाउट ब्रोकर हमने रेंट किए. दिस इज आई थिंक मे बी 16 or 17. वो बंदा इतना खुश था. He had taken a plan. Okay, he was so happy. He sent us 3 cake to our office. We said no sir, nothing is needed. He himself figured out कि हम लोग कहाँ पे हैं, क्योंकि हमारा तो ऑफिस एड्रेस भी गूगल पे नहीं होता. उसने कैसे पता किया? उसने ऑफिस में हमारे 3 केक भेजे और बोला कि यार आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू गाइज एंड योर टीम फॉर गेटिंग दिस थिंग डन so easily for me.
When people started looking up to us saying कि आपने घर तो दिला दिया, बॉम्बे में मेरा रेंटल एग्रीमेंट तो करवाओ, मुझे सरकार के ऑफिस में जाके 2 घंटा 4 घंटा खड़ा रहना पड़ता है. And then we automated that particular thing. We started ensuring that even NRI doesn't have to fly back to India. Being in US, you can rent your house and get it registered with a government approved rental agreement also. People asking you, मुझे पैकर एंड मूवर दिलवा दो, क्लीनिंग दिलवा दो, पेंटिंग. I think those were all signals which started telling us that okay, yeah, this is something which is working. What are the mistakes that you made in this journey? Mistakes, I think one or two is like, if you ask me, we were maybe way too frugal. Like in initial days, everything was done by us only. Salary भी अप्रूव करनी है तो मैं खुद जाके बैंक में अपलोड करके अप्रूव दबाता था. HR नहीं था हमारे पास में, ऑफिस में एडमिन नहीं था हमारे पास में, ऑफिस में AC नहीं था हमारे पास में. फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम वी डिडंट इवन हैव फॉल सीलिंग. अरे इसमें खर्चा क्यों करना है? तो आई थिंक मे बी वे टू फ्रूगल कैन बी, वी कुड हैव डन इट लिटिल बेटर सो दैट हमारे जो इनिशियल एम्प्लॉयज़ हैं, इनिशियल जो लोग हमारी जर्नी में थे, दे कुड हैव फेल्ट द वार्मथ मोर. दैट इज़ वन. Then other than that, I think we have been pretty well adjusted to the fact that ये रातों रात 4 गुना 6 गुना होने वाला धंधा नहीं है कि सुबह अखबार में फुल पेज ऐड आ गया 25% ऑफ, फूड डिलीवरी फ्री, वो नहीं होगा. तो हमने स्लोली बिल्ड किया है चीज़ों को. तो टिपिकली तो वी डोंट रिग्रेट एनीथिंग इन आवर जर्नी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. लॉजिस्टिक्स कुछ चीज़ें हैं विच वी विल वांट टू इम्प्रूव if you ask us to go back and improve something. Otherwise, I think it's a fantastic journey. But it will be 10 years in 2023 of you coming full time into this. Yeah. So for initial few months, I was working with Oracle. 14 is when I quit. Yeah, but you can say that very well 9 to 10 years is like we are full time into this particular thing now. Got it. आपके सक्सेस के अगर आपको डिस्टिल डाउन करना है, राइट, 4 से 5 चीज़ें, व्हाट वुड दोज 4 to 5 थिंग्स बी? व्हाई यू सक्सीडेड एंड व्हाट्स द रीजन व्हाई यू आर हियर टुडे? 3-4 चीज़ें जो मुझे पर्सनली या हम तीनों को लगता है, टिपिकली 3 of us think alike, which is a good and bad thing both. I think one is the customer problem. मतलब we have chosen a very good customer problem. It's a real nightmare. तो उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ ना कि जब हम लोगों को घर दिलाने लगे, लोगों के घर किराए पे फ्री में जाने लगे, वी गॉट एन अमेजिंग WM, वर्ड ऑफ माउथ. हमारा हर एक हैप्पी कस्टमर वॉज अ फ्री मार्केटियर फॉर अस. तो आपको भी घर मिला हमारे यहाँ से, आपने जाके किसी और आदमी को, कोई ढूंढ रहा होगा तो आपने बोला होगा, या आउट ऑफ एक्साइटमेंट आपने जाके बोला होगा. तो आर CAC हैज़ बीन एक्सट्रीमली लो historically, and going forward also it will always be low. So real customer, genuine customer problem. Then the way we have executed, that is really good, because of which we are able to get that trust and build a brand like NoBroker. Hiring right people, like mission driven log jo hamare sath aaye, like if you talk about leaders in business, product, we have Amit Sharma, we have Abhas, we have Pulkit, who is in business. So a lot of these people, no, they came from our extremely close circle. Like we are 3 friends from school. Me, Akhil Gupta, Akhil Bansal, Abhas Parikh. 3 of us work on NoBroker. And we were in school together, IITs together. Everybody took a different path. But when I was starting up, I asked them, okay, why don't we do this? They came back. Amit Sharma, who is our SVP engineering, we used to work together in one of the companies. So when I was starting up, the first thing when I knew that we are secured the funding, I went to his house and I said, this is what I want to do. And because of that tuning, this momentum what you have, I could explain it to him what I am trying to do. He could understand and he's with us. Then he got his friends. So Pulkit is his friend, Varun is his friend. So I think that team, and that more than team, it's a family. If you come down to our office, we recently went for an offsite. It's like a one big family. Our family mein you fight, you scold each other, you get angry, but everything gets settled at the end of the day. And everybody is working towards the mission. So the great team has been a very good thing. Our frugal mindset, which is not the frugality like which I was talking about, that not putting the AC and all those things, but even in terms of the way we have built the teams, the way we have built the solutions, the way we have built the tech, we have always taken a conscious decision between build versus buy. Sometimes it might have taken us little longer, but building in longer run always becomes much cheaper. Our eye over expenses, like just because we raised money, we have never ever in last 3 rounds, एक typical बंदा
जर्नलिस्ट का सवाल जब भी हमने पैसा रेस किया है ये होता था, अब आप कितनी सिटीज़ लॉन्च करने वाले हैं? लोगों को लगता है आज पैसा आया कल सिटीज़ ओपन कर दो. So we have never done that particular thing. We have kept our story consistent. Even with VCs, we have executed. We have under promised, over delivered. और इसमें भी ऐसा नहीं कि पैसा आ गया तो उसको splurge करना चालू कर दिया. We have taken the conscious right decision on that particular thing. तो इसीलिए अभी तक जहाँ तक हम लोग आ पाए हैं, the last round what we raised last November on $1 billion value, that is all lying in our bank. So $210 million is what we raised. We have more than $210 million in our bank. So we have like sufficient money for years to come. So I think these are few things which we feel have done it in the right fashion. Dear listeners, before we dive further into the podcast, I would like to welcome Prashant Ganti, Head of Product Management at Zoho Payroll and Zoho Books. Prashant, what does Zoho Payroll do and what is the story behind it? Zoho Payroll is a payroll solution from the Zoho suite of products. It's designed from the ground up to completely abstract the payroll complexity and put your payroll compliance on autopilot mode. So what do I mean by this? So when we talk about abstracting payroll complexity, we mean that a business needs to know just who their employees are, where they work, and how much they get paid. And on putting your payroll compliance on autopilot mode, what we mean is there are ever-changing rules and regulations that affect your payroll. And Zoho Payroll takes care of all those things. Business need not worry about all those things. Thank you, Prashant. Dear listeners, you will find more about Zoho Payroll in the show notes. Now, let's further continue with the podcast. Now, what are the next things besides launching in new cities that you want to do for the next 2 or 3 years? So as I was talking to you offline, so we have like 4 business lines, correct? NoBroker core, which is all about renting, buy, sell of secondary properties, buy, sell, selling new properties from the builder. That is a business which we started around 18-20 months back, doing extremely good. Home services, which includes moving, packing, cleaning, painting, anything related to your house. Then financial services, which like when you're buying a house, getting the due diligence done, encumbrance certificate, helping you with the deeds, your rental agreements, loans, rent payments. And then NoBroker route, which is like our way to be in the life of our consumer and help societies digitize, automate every single thing of theirs. Like we even put the boom barriers. Boom barriers are automatic in the society and we don't partner with anyone. We have done it ourselves. So that we have the control over the tech. So आपकी गाड़ी आएगी boom barrier अपने आप खुल जाएगा. You can even restrict that particular thing. So all of it needs lot of investment. Like abhi jaise if you talk about home services, this Diwali season was a great success for us on the cleaning and the painting side. So that is the business which has just started 18-20 months back. It will grow. That we will go deeper in existing cities on that particular business. On core real estate side, in cities like Bangalore, maybe we have 20-25% market share, but we want to increase it to 60-70%. In newer cities like NCR and all, we are still small. So we will go deeper on those things. NoBrokerhood, we are investing heavily. So NoBrokerhood is something which we started almost, I think, 3 years back. 19 is when we got serious about that particular thing. And we have grown leaps and bounds on that particular business with amazing customer experience. So that is one business where we will invest both in terms of product and the money. So I think these are the things which will keep us occupied for next few years to come. And what's the ultimate goal? Like where do you want to be? Like these are next few years, but where we want to be, so I think we should be in top 50 cities in India. Like our version 1.0 of PropTech portals, which are there in 40-50 cities where they are helping people. So I think that is one goal. But what we want to do and what we are trying to do, and maybe we are there on that particular thing, is that we want to be a one-stop shop for real estate. You can say we are Amazon of real estate. Now, you don't go to Google and search if you want a phone or whatever. You go to Amazon and search. So I'm saying we are like Amazon of real estate. Anything related to house, shop, commercial building, that should happen in NoBroker, which starts from managing that particular house or community, to renting, to buying, to reselling, to cleaning, to painting, to moving, to rent payment, to whatever it is. That is what will happen on NoBroker. So it's a big market. We are just in 6 cities at this point of time. Shorter term, we should be at least in 15-20 cities. Longer term, in India, in 50 cities. And because it's a technology-based solution and the problem exists
outside India also. If you go to Southeast Asia, you go to Middle East, similar problem exists. Maybe one fine day we will be outside India also. So we'll be a big global giant which helps you with every problem of real estate. Because there's right now nobody big in that, like technologically in real estate. Yes, nobody has done it. People have typically done it in semi-online way. So all the businesses across the globe, if you see, transaction moves out of the platform. And once transaction moves out of the platform, it is not in your control. So going back to your days when you started NoBroker, right? What was the passion या कीड़ा जैसे कह सकते हैं कि वो लीप ले पाए? कीड़ा ये था, so I'm a chemical engineer, okay? And I like to do things which makes people happy. So even in my college, I was general secretary of my hostel, lot of prods. We used to do things which makes people happy. Then I started working with Oracle just because I didn't get a general thing which I didn't know what I wanted to do. So I wanted to do MBA also, but then I came to Oracle, and first 3-4 months was all about learning how technology works. And I started loving it. So for first 5 years, when people were just moving around, I was just working with Oracle, learning how to do things. And when I was building products, it was going out. It was such fabulous feeling that you have built something, you wrote something, and it's on the UI and it's working. After that, I changed. I moved to a small startup where I have a twin brother from IIT Bombay. He was working there. And I saw that working in a small company, it was so much of fun. I worked there for 2 years. What was the company? It was called Authoria. It became People Fluent. They were in HRMS domain. They were doing compensation and performance management software. We used to compete with SuccessFactors. So it was fun. Then that company winded up in India. They said, we want to move back to US. And I think they chose 5-10 people that you also come up with us. So they asked us, my brother, Amit Sharma, everybody, why don't you join us in US? And I never ever wanted to go out of India. It's my belief. I can say it's my belief in India since the birth. That's another thing. But other than that, I'm so much attached to the land, to my family, that I want to be as close as possible to my family. I said no. Went back to Oracle. When I went back to Oracle, it was a shocker for me. It was such a dull feeling. You know how big MNCs work, correct? You are doing something, nothing is happening. And I got into some kind of a depression. And I said, boss, this is not I'll do. I will not work for anyone. So either I have to do MBA and I have to move out, or I need to do something else. Obviously, I worked in Oracle for 2 years, but that is the day I had decided I need to do something. I need to take control of the life. And one day, Saurabh was running the chain of spa, Four Fountains Spa, as an entrepreneur earlier. So he used to keep coming to my house whenever he's in Bangalore. And one fine day, we were discussing this idea. That Saurabh, I'm bored of this corporate life. I'll do an MBA. तो यार देखते हैं क्या करना है, और आई डू समथिंग ऑफ माई ओन. सो बोलते हैं यार ये करते हैं अपन लोग. हाँ यार ये तो बहुत मज़ेदार है. एंड आइडिया वॉज क्या होगा. आई नो टेक, आई नो प्रोडक्ट, आई नो हाउ टू बिल्ड प्रोडक्ट. दैट मच कॉन्फिडेंस आई हैड. सो आई न्यू आई हैड ऑलवेज वर्कड ऑन द B2B साइड. आई सेड लेट्स बिल्ड दिस. इफ नॉट एनीथिंग आई लर्न. एंड वहाँ पे उस समय वो बड़ा टर्म चल रहा था कि फील्ड एंटरप्रेन्योर की और ज़्यादा वैल्यू होती है. तो सौरभ ने बोल दिया हाँ यार कुछ नहीं है, क्या फेल हो गया तो क्या हो गया, जॉब दोबारा लग जाएगी. तो जॉब तो दोबारा लग ही जाएगी. मतलब जॉब तो ऑब्वियसली दोबारा लग जाएगी और बहुत बेहतरीन लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी उससे. और my wife, so we were expecting a baby. So my wife was in 3rd or 4th month, and at our place you go back home. मतलब राजस्थान में अपने होता है घर पे ही होना चाहिए बेबी, फर्स्ट बेबी. एंड वी डिडंट वांटेड आवर बेबी टू बी इन बैंगलोर. तो हमने कहा, तो मेरी वाइफ वापस जा रही थी कि 6-8 महीने वो वहीं पे रहने वाली है. तो वो एक बहुत अमेजिंग टाइम मिल गया था. आई वॉज ऑल अलोन. मंडे टू थर्सडे आई यूज्ड टू बी इन ऑफिस. I had told my manager Friday I'll not come to office. Friday, Saturday, Thursday night to Sunday night I used to code. Monday morning back to office. तो 4 दिन वो करते थे, 3 दिन ये करते थे. जो मून लाइटिंग आज की तारीख में. हाँ, मैंने किसी को बोला भी था actually, but you can say I'm against moonlighting. So, but that was a different kind of a moonlighting actually, where I had told my manager that I'm doing something, and I never let my work even in Oracle suffered for that particular thing. तो वो हाँ freelancing, not moonlighting. So that's how it started. वही था कि यार कुछ सीख जाएंगे. और अमित कब इन्वॉल्व हुए? तो अमित आ गए थे हमारे थोड़े दिन में ही. मी सौरभ स्टार्टेड एंड विद इन कपल ऑफ मंथ्स वी सेड यार एक और बंदा चाहिए. तो हमने अमित को पटाया. तो हमने बहुत जनों से बात करी. फिर सौरभ ने अमित से बात करी बॉम्बे में. तीनों ही कोटा के थे? नहीं, तो सौरभ मेरठ से है,
अमित यूपी में कहीं से हैं, वो कभी गोंडा बोलते हैं, कभी मेरठ बोलते हैं, कभी दिल्ली बोलते हैं, ऐसे वो इज फ्रॉम दिल्ली। एंड 3 of us we met। अमित आ गए मुझसे मिलने बैंगलोर, एंड आई थिंक फ्रॉम डे 1 वी हैड एन अमेजिंग केमिस्ट्री। अमित को आई न्यू आया सौरभ पहले से, कि सौरभ बता देते अमित है, तो सौरभ को तो आई नो सिंस 2000। तो अब तो फर्स्ट ईयर इन तो IIT। 22 साल हो गए मुझे उनको जानते हुए। सौरभ एंड अमित नो ईच अदर फ्रॉम 2002। दे नो ईच अदर फॉर 20 years। I know Amit for I think at least 13-14 years. 3 of us brings in complementary skills. I take care of tech product, Amit takes care of operations, Saurabh takes care of marketing. Personality wise we are different, very very different. तो बहुत ही अच्छा, आई थिंक वो कह सकते हो ना कि भगवान जब शादी कराता है उस टाइप की जोड़ी बन गई थी हमारी। एंड 3 of us felt extremely comfortable in each one of the company। तो बस वो मिशन था, वो चालू हो गया और कर रहे हैं। और कभी लगा था कि मतलब जैसे फंडिंग वंडिंग तो आप बाहर से देखी थी, राइट? आप तीनों ही फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स थे, कि फंडिंग वगैरह रेस कर पाएंगे उस समय? शुरू में जब मैं बात कर रहा हूँ ना, 13-14 की बात थी, जब मार्च 14 से लेके दिसंबर 14 में टर्म शीट आई थी, फरवरी 15 में पैसा आया था। वो 10-12 महीने जो थे, उसमें शुरू के 3-4 महीने तो आपके एक्साइटमेंट में जाते हैं कि हाँ हो जाएगा। हर वीसी से बात कर रहे हो, कोई वीसी कभी ना तो करता ही नहीं है, एवरीथिंग इज गुड। आप भी यही करते होंगे, करेक्ट? रियल फीडबैक होता नहीं है। बट 1-2 बार जब वो हुआ ना कि हाउसिंग का हो गया पैसा रेज, एंड पीपल सेड वी विल नॉट डू इट, थोड़ा सा लगा क्या होगा, बट ऐसा नहीं लगा था कि यार कुछ नहीं होगा। ऑब्वियसली अभी मतलब 10 साल पहले मैं जाके एकदम आई विल नॉट बी एबल टू सी व्हाट वाज देयर इन द माइंड, या बट 1-2 बार तो ऐसा मोमेंट आया था वेयर वन ऑफ अस गॉट स्केयर्ड, मे बी आई गॉट स्केयर्ड, बट वी सेड ओके लेट्स कंटिन्यू डूइंग इट, क्योंकि फेल्ड एंटरप्रेन्योर की ज़्यादा वैल्यू होती है, तो ज़्यादा फेल हो जाएंगे। तो उसके बाद तो इट हैज़ बीन अ स्मूथ जर्नी बिकॉज ऑफ आवर वे वी हैव एग्जीक्यूटेड। एक बार हुआ है कि वी वर लाइक रनिंग आउट ऑफ द कैश आफ्टर सीरीज बी, बट वी वर एबल टू रेज। एंड अभी कौन सा अल्फाबेट चल रहा होगा फंडिंग में? अरे ई है यार, पता नहीं वो क्या हो, मतलब वो तो आप जो भी पेपर में डाल दो वो हो जाता है, वो तो मुझे समझ में भी नहीं आता। हमने तो 2 राउंड को डी बोल दिया था, ऐसे जी भी हो जाए, जी भी, क्या फर्क पड़ता है उससे, इट डजंट मैटर। पर अब आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे आपको अब फंड रेज करने की शायद ज़रूरत नहीं है। मोस्ट लाइकली नहीं पड़ेगी हमें ज़रूरत, बिकॉज एज आई सेड वी हैव मोर देन $200 million इन द बैंक, वी आर ग्रोइंग, तो आई डोंट थिंक वी शुड नीड मनी। चाहिए रहेगा तो शायद एक सीरियस फास्ट एक्सपेंशन के लिए चाहिए रहेगा, बट अदरवाइज वी आर सेटल्ड। पर जैसे एक स्टार्टअप को बनाने में 10 साल का बेस लग जाता है, राइट? आपको यहाँ 10 साल लगे। लोग शुरुआत में इतना समझते नहीं, राइट? शायद आपने भी उस समय पैशन में स्टेप लिया, राइट? और फिर एक के बाद एक कदम चलते चले गए। बट 10 साल इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आई थिंक मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स डोंट रियलाइज इट टेक्स 10 years टू बिल्ड एनीथिंग मीनिंगफुल। दिस इज द फैक्ट। कोई भी धंधा 2-4 साल 5 साल में नहीं बन सकता। मतलब मैं तो इनफैक्ट आई टेल इट टू लॉट ऑफ वीसीज आल्सो, जो बोलते हैं ना 4 साल 5 साल में एग्जिट दे दो, यार एग्जिट दे दो, अरे प्रॉफिटेबल नहीं हुआ तो तुम इन्वेस्टर का पैसा जला रहे हो। बॉस, तुमने पैसा डाला ही जलाने के लिए था। तुम्हारी 10 में से एक ही कंपनी चलने वाली है, ठीक है? तो वो तो होने ही वाला है, 8-10 साल लगेंगे। और इंडिया में अभी इफ यू से टेलविंड इज नाउ with digitization, with internet coming in, with our per capita increasing, people getting well off, people are ready to pay for services. As our cities are getting urbanized, you are getting pain, correct? You will pay for anything now for the luxury. People are paying for 10-minute delivery also now, correct? So वो टाइम लगेगा मार्केट को भी मैच्योर होने में, प्रोडक्ट को भी मैच्योर होने में। तो 8-10 साल तो कम से कम किसी भी चीज़ में लगेंगे। मेरे हिसाब से जो चीज़ बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है वो बहुत तेज़ी से नीचे भी आती है, ठीक है? तो है अभी लास्ट 2-3 साल में हुआ है कि लोग 1-2 साल में दे हैव रीच्ड वेयर दे आर। आई विश देम बेस्ट कि यार वो लोग ऊपर रहे, बट उतनी तेज़ी से नीचे भी आ सकते हैं। तो इट टेक्स टाइम। वी डिडंट नो। इफ़ यू आस्क मी व्हाई डिड वी टेक द बेट, सो समटाइम्स नॉट नोइंग इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, कैसे फंड रेज करते हो, कंपटीशन हो तो इन्वेस्टर पैसा नहीं डालता है। हमने तो जब नो ब्रोकर स्टार्ट किया तब इंडिया का हर एक वीसी ने एक प्रॉपटेक में बैट ले रखी थी। ये कब पता लगा? जब हम घुस गए अंदर, सबसे बात करी तो किसी, हाँ हमने तो इंडिया प्रॉपर्टी में डाला हुआ है, हमने तो इंडिया होम्स में डाला हुआ है, हमने तो कॉमन फ्लोर में डाला हुआ है, हमारी तो 99 एकर्स है, हमारी तो मैजिक ब्रिक्स है। तो ये था उस समय। क्राउडेड स्पेस दिख रही थी, बहुत क्राउडेड स्पेस थी। तो नॉट नोइंग समटाइम ब्लेसिंग। यू कैन नॉट प्लान। सी बॉस, मेरे को तो ये लगता है कि यू आस्क मी
कि 3-4 महीने बाद क्या होने वाला है, तो मुझे नहीं पता क्या होने वाला है. तो यू कैन वर्क इन योर प्रेजेंट एंड मे बी यू कैन वर्क फॉर अनदर अ क्वार्टर 2 क्वार्टर इन फ्यूचर. इफ़ यू आस्क मी यार आपको पता था 2015 में कि यू विल बी सच बिग कंपनी, नहीं पता था. यू आस्क मी, आपने भी मेरे से पूछा वेयर विल बी, व्हाट विल वी बी. आई हैव टोल्ड माई एम्बिशन दैट दिस इज व्हाट वी वांट टू डू इट. हाउ वी डू इट, वेदर विल बी एबल टू डू इट, व्हेन वी विल डू इट, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया. वी कैन ट्राई, मेहनत कर लेंगे, जो होना है वो उसके बाद होगा, वो पता लग जाएगा. है ना. आप में एक ये अच्छी बात है राइट, आप एक सिटी पे काफ़ी लंबे टाइम तक स्टिक रहे थे. Yeah. बैंगलोर में खोला और आई थिंक 4-5 साल बैंगलोर को दिए थे. हमने बैंगलोर और बॉम्बे किया था 2014 में. उसके बाद 2016 में, 17 में इनफैक्ट हमने बाकी 2 सिटीज़ खोली थी. फिर हमने 2-3 साल उन सिटीज़ में रहा. अभी हमने 2019 में हैदराबाद और दिल्ली लॉन्च किया था और 2 साल कोविड आ गया. तो वो हमारे लिए जीरो टाइप का, मतलब हैदराबाद एंड दिल्ली आर एक्सट्रीमली न्यू मार्केट फॉर अस. सो टिपिकली 2.5 से 3 साल लगता है एक सिटी को मैच्योर होके, ग्रो होके, डिसेंट एक सफिशिएंट मास बिल्ड करने में. सफिशिएंट मास बिल्ड करने में. एंड आपका अप्रोच कभी नहीं रहा कि एक सिटी में घुसे तो स्प्रे एंड प्रे कर दो उस सिटी में. चलेगा ही नहीं. मैं तो फूड डिलीवरी हूँ नहीं. देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर आप नो ब्रोकर को देखो C2C प्लेटफॉर्म में, तो इक्विलिब्रियम इज द की हियर. मेरे पास बहुत सारी सप्लाई और डिमांड नहीं हो तो ये अनहैप्पी हो गए, बहुत सारी डिमांड है सप्लाई नहीं है तो ये अनहैप्पी हो गए. तो हमारा जो WM वर्ड ऑफ माउथ है, जहाँ पे हमारे हैप्पी कस्टमर्स आर फ्री मार्केट, वो नहीं होगा अगर ये बैलेंस नहीं बनेगा. तो मतलब वो टेक्निकली प्रैक्टिकली किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है. मेरे पास वैसी पावर नहीं है ना कि मैं सारे रेस्टोरेंट्स को ले आया और अगले दिन पेपर में ऐड दिया और मैं कहा कि अब मैं आपको डिस्काउंट देके एकदम से मार्केट बना लूँगा. आई डोंट हैव द लिबर्टी, आई डोंट हैव सच बिजनेस मॉडल. वो वाला बिजनेस मॉडल भी अच्छा है बट आई डोंट हैव इट. तो फिर मुझे उसे संभल के चलाना पड़ेगा. आप ये मान लो ना कि एक डंडी के ऊपर 2 मार्बल लेके चल रहे हो तो उसे बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, उसके बिना नहीं चलेगा. आई थिंक इस चीज़ की अवेयरनेस को मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि एवरीबडी थिंक्स दैट अगर कंज्यूमर कंपनी हो तो रॉकेट की तरह दौड़ जाओ. मतलब दौड़ेंगे, अभी हम दौड़ रहे हैं ना. मतलब जब वो आपका व्हील बन गया एंड व्हेन पीपल आर एडिंग टू इट फास्ट, बट आपको टाइम देना पड़ेगा. अब गाड़ी का एक्सेलरेशन है. अब आपने या तो आप पोर्शे खरीद लो, उसमें तेल डाला, एकदम से बटन दबाया, शुरू में भाग गई, 4 सेकंड में आपको 100 की स्पीड पे ले गई. या फिर आप बोलोगे यार मैं डिसेंट गाड़ी खरीदता हूँ, एक्सेलेटर दबाऊंगा, धीरे 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 बढ़ेगा, बट 100 से 200 में फास्ट जाने वाला हूँ. सो इट्स अबाउट 0 to 1, वेदर यू वांट टू डू 0 to 1 एक्सट्रीमली फास्ट और यू वांट टू डू 1 to 10 फास्ट. ये तो ठीक है, 0 to 1 में लर्निंग करेंगे, मिस्टेक्स करेंगे, सीखेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, प्लेबुक बनाएंगे और फिर उसे रेप्लिकेट करेंगे. That is what we have done and it has worked for us. May not work for everybody. बट या व्हाट आई अप्रिशिएट इज आपने एक सॉलिड बेस बनाया राइट, अब उसके बेस पे एक्सपैंड कर रहे हैं. Yeah, we have like 2.2 crore customers who have used us. I think by far the largest. If there is a owner ने पहली बार कब प्रॉपर्टी लिस्ट करी थी, तब कितने पे रेंट हुई थी, दूसरी बार कब करी, तीसरी बार करी. So we have become a MLS in India. We have so much of information that we can do the price prediction. We can predict how much time will it take for the property to get rented out. Nobody else can do it. And that's the power of technology. तो जैसे थोड़ा मुझे रियल एस्टेट का एटलीस्ट बैंगलोर का आप डेटा बताइए कि एवरीबडी सेइंग द रेंटल प्राइसेस हैव मूव्ड अप बाय अ लॉट. व्हाट हैज बीन द रीजन फॉर इट एंड हाउ मच बाय इट फार इट हैज मूव्ड, एंड आगे भी क्या मूव होता ही रहेगा क्या? 3 चीज़ें हुई हैं. कोविड हुआ, सब लोग अपने घर चले गए, ठीक है. एवरीबडी वेंट बैक एंड थॉट दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, अब इसी तरह दुनिया चलने वाली है. तब ढक करके रेंटल प्राइसेस गिर गए. कोविड हुआ तो 2 साल में कुछ काम नहीं हुआ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर कुछ नहीं हुआ. सो देयर इज नो सप्लाई विच हैज कम अप. विद इन फर्स्ट 6-7 months ऑफ कोविड पीपल रियलाइज बॉस दिस इज अ अपॉर्चुनिटी टू बी डिजिटल, करेक्ट. एंड द वे मनी स्टार्टेड कमिंग इन इंडिया, एवरीबडी स्टार्टेड हायरिंग. लास्ट 2 साल में इट हैज़ बीन लाइक बूम ऑफ हायरिंग. अगर एक बंदा हायर करते थे, लोगों ने 1.5-2 बंदा हायर किया. तो 2 साल में सप्लाई कोई ऐड नहीं हुई. जो एग्जिस्टिंग लोग थे उसके अगर ऊपर 2 ऐड होने वाले थे तो 4 ऐड हो गए. व्हेन लॉकडाउन वर रिमूव्ड, एवरीबडी स्टार्टेड कमिंग बैक, ऑटोमेटिकली डिमांड वाज पेंटेड अप. कोविड में जब लोग घर पे रहे, जैसे मिलेनियल्स हैं, जेनजी है, उन्हें क्या लगता था कि रेंटल इज़ द इकोनॉमी, करेक्ट. हम लोग तो गाड़ी नहीं खरीदेंगे, ऊबर में जाएंगे, ओला में जाएंगे, किराए के घर में रहेंगे, और घर में भी कहाँ रहना है. वी स्पेंड आवर टाइम इन ऑफिस, इन पब्स एंड ऑल दोज थिंग्स. दे वर नॉट वरीड अबाउट किस तरीके घर में रहना है. देन सडनली पीपल रियलाइज द वैल्यू ऑफ हाउस, कि यार एक अच्छा घर
अच्छी सोसाइटी के अंदर, गेटेड सोसाइटी के अंदर, एम्यूनिटीज, क्योंकि लॉकडाउन में तो यही था ना यार, अगर आपके पास एम्यूनिटी है तो आप जाके स्क्वॉश भी खेल सकते हो, बैडमिंटन भी खेल सकते हो, बट यू कैन नॉट स्टेप आउट. सो ऑटोमेटिकली एक ये फैक्टर हो गया जिससे गेटेड सोसाइटीज, अच्छी सोसाइटीज की डिमांड पेंट अप हो गई. ये सब चीज़ें मिल के जब डिमांड वॉज 3x 4x ऑफ एक घर के लिए एक की जगह 4 बंदे खड़े हैं, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस शॉट अप. तो इन गुड सोसाइटीज, गेटेड सोसाइटीज, और उसके ऊपर बैंगलोर और बाकी सब सिटीज के अंदर द वे गवर्नमेंट वर्क्स, वेयर देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देयर इज नो विजिबिलिटी, कब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, पीपल रियलाइज बॉस आई कैन नॉट ट्रैवल फॉर 2 hours इन द ट्रैफिक. Ola, Uber suddenly गायब हो गए. The surge in these taxi fares was so high, so people said it's better to stay closer to the house. So if you see the houses, the flats near to the hubs of IT, the prices have gone up drastically. To give you the number, it has gone up by anywhere between 40% to 80%. जो घर पहले 20,000 रुपये में जाता था, 40,000 रुपये में आराम से चला जाता है. अच्छी जस्ट एक साल के अंदर, क्योंकि 2021 में मान लीजिए कोविड में थोड़ा सा, हाँ, ये अभी हुआ है, ये हुआ है 2022 के अंदर, जनवरी फरवरी के बाद 40% हाउसेस प्राइस, 30-40% रेंट्स तो बहुत इजीली बढ़ गए. एंड व्हाट इज द ट्रेंड फॉर नेक्स्ट ईयर की ये इसी तरह अब स्टेबलाइज होगा. लाइक ऑब्वियसली नाउ, अब व्हेन द इकोनॉमी, होपफुली देयर इज नो डाउन टर्न, बट व्हाट वी सी ग्लोबली, पीपल आर starting to fire, there is a easiness which is coming in terms of the salary, irrational numbers may fade away, or lot of supply which will come in. अब तो हो गया, 1 साल साथ चालू हो गया जब से सप्लाई चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली डिमांड सप्लाई जो है वो थोड़ा सा जो अनइवननेस थी, दैट विल ट्राई टू बिकम काम डाउन. उससे रेंटल्स विल नॉट गो डाउन, but it will not increase at this pace. And similarly, house prices have also gone up drastically because of the same reason. But demand is very high. Even now, demand is good. Not extraordinary कि जहाँ पे irrational value मिलने लग जाएगी. Because India is growing, and the way India will be in next couple of decades to come, housing, रोटी कपड़ा और मकान, 3 चीज़ें बहुत important हैं, और मकान चाहिए लोगों को. तो देर विल बी इंक्रीज, डिसेंट इंक्रीज विल बी देयर. ये एक स्टेप चेंज था जो हो गया है और वो रहेगा, उससे नीचे नहीं आएगा. बट जैसे ग्लोबल फैक्टर्स को देखें, रिसेशन, वॉर, चाइना, तो ये सब किसी चीज़ में स्नोबॉल करेंगे इंडियन हाउसिंग मार्केट के? इम्पैक्ट तो आएगा, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो आएगा. बट अगर आप ये देखो अक्रॉस द ग्लोब, मनी इज देयर, VCs आर सिटिंग विद मनी, यू नो बेटर, राइट? And which is the place where people can invest. China people cannot invest, correct? US में recession है, US में फटा हुआ है बुरी तरीके से. Which is the single biggest economy. We are 1.4 billion. We will be the single largest nation maybe in next 3-4-5 years to come. China बंद है, 140 करोड़ लोग, कहाँ पे इकोनॉमी तो हमारी है, कंज्यूमर तो हमारे ही हैं. और the way we have showed in last 10 years, the things, the companies have grown, the businesses have improved, not only the startup I'm talking about, the infrastructure. You go, क्या amazing roads बन गए इंडिया में. Up north तो बहुत amazing roads are there. काश बैंगलोर में ही बनते अच्छे रोड. मैंने बोला up north amazing roads हैं. Like there's so many projects which are going on. So money has to flow in India. अब ये थोड़ा सा एक, आप बहुत बड़ी रेस में भाग रहे हो, बीच में लोग रुके हैं, थोड़ी सी सांस वांस लेंगे, पानी वानी पियेंगे और वापस से चालू हो जाएंगे उसके. बट यू थिंक कि 2030 में बहुत प्रोग्रेस हो चुकी होगी? तो बहुत ज़्यादा. एंड आई एम लाइक सुपर ऑप्टिमिस्टिक. आई यूज टू फील दैट अगले 10 साल इंडिया के, मुझे लगता है 10-20 साल इंडिया के. आर किड्स, द थिंग्स व्हाट वी हैव सीन, वो तो होता ही है ना. हमारे पेरेंट्स बोलते थे हम तो लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते थे, हम हमारे बच्चों को भी बोलते हैं कि तुम लोग, यू गाइज आर सो प्रिविलेज्ड. बट आई एम श्योर दैट next generation will even more be blessed in India. When they are born, they'll be even more blessed in India. जैसे आपके पेरेंट्स की एस्पिरेशन थी आप IIT जाएं, और नहीं थी, उनकी भी नहीं थी. पर फिर भी राइट, आप में कहीं ना कहीं से तो पिकअप की होगी, राइट? लोग पेयर से पिकअप करते हैं. और कहीं ना कहीं आपने बताया कि यू वांटेड टू डू MBA ऑल्सो. यू वुड हैव पिक्ड दैट एस्पिरेशन फ्रॉम लाइक friends, colleagues, friends or classmates to go to abroad to do an MBA. Do you think your kids will have the aspiration to go out of India to study because they have means, resources? This is one question which keeps going in my mind, and I am so puzzled because the person I am, I want everybody to be close to me. मतलब it should be one big family, सब साथ में रहो. But the way things are happening, and because I think in our generation, I'm sure we belong to the same generation. India में हर कोई middle class था या lower middle class था, correct?
और my father was a businessman. We are three brothers, twin and one elder brother. One thing which we knew that all three will not fit into this particular business. And एजुकेशन अपने मिडिल क्लास के अंदर बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कुछ पढ़ोगे तो कुछ कर लोगे. वो मेरी मम्मी बोलती थी पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब. अब वो भी नहीं चलता है. तो वो था. तो उसकी वजह से IIT केम एज अ सरप्राइज. वी आर फ्रॉम कोटा. कोटा इज एजुकेशनल हब, कोचिंग हब, वॉट एवर यू से. बट आप भी बंसल क्लासेस गए होंगे. हाँ, बट हम जब किए थे तब ये सब हुआ नहीं था, इतना बवाल नहीं था. बंसल सर इतने बड़े रूम में पढ़ाते थे, 14-15 बच्चों को पढ़ाते थे. एक टेस्ट लेते थे जिसमें 2,500-3 हज़ार बच्चे जाते थे और उसमें से वो 60 या 65 बच्चे सेलेक्ट करते थे. तो हमें किसी ने बोला ये टेस्ट हो रहा है. हमने जाके वो टेस्ट दे दिया. 65 बच्चों में हम लोग सब, मैं, आभास, अंशुल, हम सब जो 5-6 दोस्त थे हो गए. तो हमें लगा यार कुछ तो आता है हमें. तो अब मुझे पर्सनली ये पता था CPMT होती है, RPMT होती है और CPMT होती है. RPMT होती थी राजस्थान PMT, CPMT होती है सेंट्रल PMT. ऐसे RPET, UPPET ये सब होती थी. बट आई डिडंट नो व्हाट इज, व्हाई देयर इज नथिंग कॉल्ड CPET, सेंट्रल PET. तो किसी ने बोला कि वो IIT होता है. जैसे हाँ ठीक है यार, लोग CPMT में आते तो विल प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर. यार दैट इज हाउ वी गॉट इनटू द IIT. एंड आई थिंक अभी भी वही है. हमारे बच्चे, आई डोंट थिंक दे विल बी एवर, आई होप, but I don't think they'll be able to crack any competitive exam with the zeal and enthusiasm and the hard work which we had, because competition is cutthroat. मैं मेरठ से आता हूँ, so you can imagine. तो competition is cutthroat, correct? We met IIT Bombay director a couple of weeks back here only in the park, and one question I asked him is कि अब तो सीट्स बढ़ गए. मतलब हमारे टाइम पे तो 2,500-3,000 सीट्स होते थे, अभी हो गए कुछ शायद 10-12-15,000 सीट्स होंगे. What is the composition of the people? अपने टाइम पे टाउन से लोग आते थे, कोटा, जयपुर, मेरठ, ठीक है, यहाँ से. अब और इंटीरियर जो गांव कस्बे हो गए ना, वहाँ से लोग IIT में आते हैं. तो उसका रीज़न यही है, जो भी अंडर प्रिविलेज है, whoever wants to do something, they will do hard work. And because education has reached to the roots via EdTech, whatever it is happening, it is enabling every single child in India. सो कॉम्पिटिशन इज अमेजिंग. जिसके पास ज़्यादा भूख होगी, जिसके पास ज़्यादा थ्रस्ट होगी, वो एक्सेल करेगा. तो IITs तो मुझे नहीं लगता होने वाला है. एंड इन द सिटीज़ लाइक बैंगलोर, बॉम्बे, अभी तो फैशन है, लाइक एवरीबडी गेट्स इनटू इंटरनेशनल स्कूल और उसके बाद इवेंचुअली दे टेक द ईजियर रूट विच इज गेटिंग इनटू वन ऑफ द यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया. दैट इज द ट्रेंड विच आई एम सीइंग. माई डॉटर इज 8-year-old. आई होप इन नेक्स्ट 5-10 years थिंग्स इम्प्रूव. इंडिया हैज़ मेनी मोर यूनिवर्सिटीज सो दैट दे कैन बी हियर, एंड आई होप इट विल हैपन. देखते हैं. बट ट्रेंड यही है, सिटीज़ का ट्रेंड यही है. एंड आई एम श्योर इट यूज टू हैपन. हमें शायद एक्सपोजर ही नहीं मिला व्हेन वी वर इन 10th-12th, और आवर पेरेंट्स नेवर गॉट एक्सपोजर इन सिटीज़ लाइक मेरठ एंड कोटा कि आप बच्चे को बाहर भी भेज सकते हो पढ़ने के लिए. वन, बिकॉज ऑफ मनी. सेकेंड, बिकॉज दे डिडंट इवन नो कि ऐसा कुछ होता है. तो आई थिंक एक्सपोजर इज डिफरेंट इन बिगर सिटीज़ एंड द स्मॉलर सिटीज़. तो वो हो रहा है और होगा. बढ़ गए बच्चे बाहर पढ़ने जाएंगे, सेटल भी बाहर होंगे for at least first 10 years of their life. And then the question comes back to, right, will India have the best brains who are building the 2020 right now in 2030? I think वो नहीं होगा. देखिए, brain drain तो if you talk about 90s, every single IITian from India went out of India. Correct. But that has stopped now to larger extent. आपके बैच में भी बहुत लोग गए होंगे. हमारे बैच से थोड़ा कम होने लगा था. मतलब इतने लोग PhD करने नहीं जाते थे. हमसे पहले सौरभ वौरभ का बैच हो गया, उससे पहले वाले बैच हो गए. वहाँ टिपिकली यही था, या तो आप MS करोगे बाहर से, फिर PhD करोगे, क्योंकि जॉब्स थी नहीं ना इंडिया के अंदर. अब वी हैव लाइक गुड हाई पेइंग जॉब्स, लाइक पीपल गेटिंग आउट ऑफ IIT एट 1 crore पैकेज, जो भी उसमें आप फ्रॉथ जोड़ लो. बट स्टिल a good IITian from a good college, they can easily make 2 lakh rupees per month, which is not a small money. If you talk about US, वहाँ तो इन्फ्लेशन नहीं था. सैलरीज अभी भी 96,000 100,000 के आसपास है, जो 80 लाख रुपए हो गया. आप उसमें अपना कंपाउंड कर दो, फैक्टर लगा दो, तो वो 10-12-15 लाख रुपए के बराबर आता है इंडिया में. ठीक है, तो सैलरीज आर गुड. सो बट अब when everybody starts going out, I don't think India will ever have shortage of talent.
ये तो हम उनकी बात कर रहे हैं ना जो लोग प्रिविलेज हो गए हैं, शायद हम जैसे लोग हैं जो शायद अब थोड़े प्रिविलेज हैं कि वी कैन सेंड पीपल, बट स्टिल इफ यू सी इन इंडिया वी आर वे बिलो द एवरेज इनकम इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड. नॉट एवरीबडी विल बी एबल टू अफोर्ड इट. तो अगर ऊपर से लोग जाएंगे तो नीचे से लोग आ जाएंगे. हमारे पास बहुत ह्यूमन रिसोर्स बहुत है, तो आई डोंट थिंक वी विल एवर हैव दिस प्रॉब्लम. थैंक यू सो मच अखिल, आपसे डिस्कशन करके बहुत मजा आया. राइट, वी वेंट फ्रॉम नो ब्रोकर टू डिस्कस, राइट, हाउ आर थिंग्स इवॉल्विंग एट स्केल इन इंडिया एंड व्हाट डज 2 to 2030 लुक लाइक, बिकॉज आज की तारीख में एवरी IITian वांट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर. हाँ, वो एक प्रॉब्लम हो गई. वो एक प्रॉब्लम हो गई. That is a good problem to have. Good problem to have. You go to, so we consistently go to IITs for hiring. Since 2015 we are going. तो the way CVs have changed. जब हम लोग थे तो हम लोग क्या लिखते थे, मतलब becoming a general secretary of hostel institute, that was a big achievement. It's a great extracurricular activity. उसके बेसिस पे कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट करेंगी और यू लव इट. तो ये होता था, लेड अ मल्टी-टियर टीम ऑफ 30 people टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग. अब आप जाओ कैंपस में, फाउंडर एंड सीईओ, और वो भी एक बार नहीं, दो बार. They would have already started. So one of my distant cousin, I was talking to him and he's not from IIT. तो मैं बोल रहा था अब तो वापस चले गए होंगे जॉब करने, दिल्ली में काम कर रहे हो, 6 महीना हो गया, ऑफिस जाते हो कि नहीं जाते हो? तो बोलता हमें तो जाना पड़ता है. मैंने कहा जाना भी चाहिए क्योंकि यू गाइज आर लाइक द जूनियर मोस्ट एंड यू नीड टू वर्क. मतलब तुम लोग सीखोगे कैसे? तो बोलता नहीं हम तो सीनियर है. मैंने कैसे? बोला हमें तो बच्चे संभालने पड़ते हैं. मैं कहा हाउ? बोला आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस. 2 साल तो मैं कॉलेज के अंदर भी काम कर रहा था. So that is how it has become. Good problem to solve, definitely. Thank you so much अखिल, बहुत मजा आया आपसे. बहुत मजा आया. Thank you and I think 40 मिनट हो गए, पता नहीं लगा. So I love to talk.